Hello students, I am Dr. Debjani Mukherjee, Head of the Department Psychology, St. Thomas College, Bhilai. Today we will be talking about this experiment on short-term memory or STM. This experiment is done by the students of MA Psychology Semester 3 as well as BA first year students also. In BA first year, we will just do it on one subject, but the procedure will be the same. In MA semester 3, we will do it a bit more elaborate as far as the interpretation is concerned, and also the number of subject will be more. Whenever we do an experiment, we have a problem that we have to solve. The problem for this experiment on short-term memory is to study the effect of different interpolated activity time on short-term memory of my subject. I'll explain to you what interpolated activity time is when we come to that point. So whenever we have a problem that we have to solve, in an experiment we always go with an hypothesis. Hypothesis is the probable result that we expect. It's an assumption that we think will happen. That means the result that will surface after the completion of the experiment. So the hypothesis here says that memory will be better when there is less gap between presentation and testing as compared to when there is more gap between presentation and testing. चलिए थोड़ा विस्तार से समझाते हैं. ये जो प्रयोग है ये लघु स्मृति का प्रयोग है. तो इसमें आपको अपने प्रयोज्य का जो लघु स्मृति का जो क्षमता है उसका अध्ययन करना है. उपकल्पना या परिकल्पना एक ऐसी चीज है जिसको आप आपके प्रयोग करने के पहले अनुमान लगाते हैं कि आपका क्या रिजल्ट आएगा. तो इस प्रयोग का जो उपकल्पना है वो ये कहता है कि आपकी स्मृति तब अच्छी होगी जब याद करना और उसको सुनाने के बीच का जो समय है वो जितना कम रहेगा उतना आपका स्मृति लघु स्मृति अच्छा या बेहतर होगा. चलिए चरों की बात करते हैं. वेरिएबल्स. हियर वी हैव two variables. Independent variable is that variable of which effect we have to study, and in this particular practical or experiment, the different time gap between presentation and testing, that is the 12 seconds, 8 seconds and 4 seconds interpolated activity between presentation of a CVC and testing of the CVC is the independent variable. स्वतंत्र चर इस प्रयोग में वो चर है जिसका आपको जिसका इफेक्ट देखना है अपने प्रयोज्य के कार्य में. तो जब आप उसको कुछ भी याद करने को देते हैं, लघु स्मृति का आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ आपका प्रयोज्य कुछ याद करेगा फिर उसको आपको सुनाएगा. इस दोनों कार्य के जो बीच का जो समय है उसमें आप उससे कुछ अन्य कार्य कराएंगे और ये देखेंगे जब ये बीच का समय लंबा होता है तो उसमें भूलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं. जब ये गैप कम रहता है 4 सेकंड का होता है तो भूलने का चांसेस कम रहते हैं. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये जो गैप्स हैं इंटरपोलेटेड एक्टिविटी के जो अलग अलग समय हैं इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका क्या प्रभाव हो रहा है आपके प्रयोज्य के लघु स्मृति पर, ये आपका स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल आपके प्रयोज्य के जो सही जवाब है वो आश्रित चर है. दैट मीन्स द नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज of the subject
is the dependent variable. Now, materials required for this experiment, we need a paper and pencil and a set of 21 CVCs. Now, CVC, these are nonsense syllables, NSS, in form of CVC, that is consonant, vowel and consonant. So 21 CVCs we will be taking for this experiment. Now, since you are in your MA third semester, we will do this experiment on two subjects, subject 1 and subject 2, and you will be writing all the details about the subject, that is name, age, gender, male or female, the class that the subject is, etc. इंट्रोडक्शन चैप्टर पे इंट्रोडक्शन में आप स्मृति का जो परिभाषा है वो लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेमोरी के, दैट यू विल बी राइटिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, short term memory and long term memory. Now, since this experiment we are dealing with short term memory, I'm just focusing on the definition of short term memory. Now, short term memory is the capacity for holding a small amount of information in mind in an active, readily available state for a short period of time. For example, short term memory can be used to remember a phone number that has been just recited to you. तो जब हम ये इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इसमें जैसे कि मैंने कहा स्मृति के बारे में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, वो भी लघु स्मृति के विषय है हमारा, तो लघु स्मृति क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, इसका परिभाषा लिखते हुए इसको समझाएंगे। वैसे जो भी चीज़ आपको बताया जाता है और कुछ क्षणों तक वो आपके दिमाग में, आपके याददाश्त में रहता है, आपकी स्मृति में है, और 4-5 सेकंड के बाद आप भूल जाते हैं, तो वो कितने देर तक आपके स्मृति में था, थोड़े देर तक, कुछ सेकंड्स के लिए, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। और अब हम आते हैं विधि पर, प्रोसीजर। नाउ प्रोसीजर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट यू विल ब्रिंग द सब्जेक्ट टू द लैब, मेक द सब्जेक्ट सीट देयर properly, comfortably. Then you will give him a list of 21 CVC that you will ask him to learn and recall one at a time. CVC जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये NSS होता है, नॉनसेंस सिलेबल्स, लेकिन ये जो 3 अक्षरों का जो नॉनसेंस सिलेबल है, ये CVC फॉर्म में बनाया गया है, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। हम 21 CVCs लेकर चलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था 3 अलग अलग टाइम का आप इंटरपोलेटेड टास्क रखते हैं, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, तो हर एक कैटेगरी में 7 CVC का आप प्रयोग करेंगे। सो जब आपने एक CVC अपने प्रयोज्य को याद करने को दिया और 4 सेकेंड के बाद आप उसको पूछेंगे, तो ये याद करना और आपको उसको पूछने के जो बीच का जो टाइम है, इस समय पर आप उससे एक 2 डिजिट नंबर से 3 का सब्ट्रैक्शन, घटाना करवाएंगे, और वो 4 सेकंड के लिए वो ऐसे ही घटाता चला जाएगा, 3 -3 -3, फिर आप उसको रोककर जो CVC आपने उसको याद करवाया था पूछेंगे। फिर आप दूसरा CVC उसको दिखाएंगे, उसने याद किया तुरंत, आपने 2 नंबर दिए उसको, जैसे 57, 65, ऐसे 2 डिजिट का नंबर दिया, वो -3 करेगा 8 सेकंड तक, और 8 सेकंड के बाद आप उसको रोककर उससे आप फिर से जो CVC आपने दिखाया था वो पूछेंगे। ऐसे ही 12 सेकंड का गैप तक आप उससे -3 करवाएंगे और फिर उससे पूछेंगे। सो कोई भी CVC आप याद करवाते हैं, फिर उससे पूछते हैं, उसके बीच का जो समय है
आप उससे जो ये घटाने का जो काम करवाते हैं, 2 डिजिट नंबर से -3 करवाते हैं, इस कार्य को इंटरपोलेटेड एक्टिविटी कहा जाता है। हमारा ये मानना है कि जब ये इंटरपोलेटेड एक्टिविटी थोड़ा लंबा होता है, तब उसमें आपका जो सीवीसी आपने याद किया है उसको आप भूल जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो स्पैन है 3 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स, जैसे उसके बाहर आपका प्रोसेस जाता है वहाँ पे फॉरगेटिंग हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी खत्म हो जाता है। So CVC will be recalled after the interpolated task. After the process is finished, you will send the subject out, say, by thanking him, and before that you will ask him to write the introspective report for you. Then you will start the analysis and interpretation of your data. जब आपके प्रयोज्य से आप पूरे के पूरे 21 सीवीसी को याद करवाकर, इंटरपोलेटेड एक्टिविटी बीच में करवाकर, फिर उससे रिकॉल करवाकर उसका जो प्रोसीजर है सब्जेक्ट का वहीं ख़त्म हो जाता है, आप धन्यवाद ज्ञापन करके उसको अपने लैब से विदा करेंगे। उससे पहले आप उससे एक इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लिखवाएंगे, जहाँ पे वो ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम उसको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, क्या कठिनाई उसको फील हुई, वो अपने विचार वहाँ पर आपको 3-4 वाक्यों में लिखकर जाएगा। अब हम आते हैं इसका इंटरप्रिटेशन की तरफ, जो फाइनल डिस्कशन आप करेंगे। सो इफ यू फाइंड मोर सीवीसी रिकॉल्ड व्हेन द टाइम गैप between presentation and testing is less, like 4-second gap, as compared to 8 and 12-second interpolated activity, that means the effect of STM will be seen. अगर आपका प्रयोज्य 4 सेकंड के इंटरपोलेटेड एक्टिविटी के बाद सीवीसी को आप याद रखने में समर्थ है, बोल पा रहा है, याद उसका सीवीसी है, आपको सुना पा रहा है, और अगर 8 सेकंड और 12 सेकंड तक वो भूल जा रहा है, इसके मतलब लघु स्मृति का यहाँ पर आपको छवि दिखेगी, आपको उसका कार्य दिखेगा। That means short-term memory happens till 4 seconds, 5 seconds. After that, forgetting happens. But if you find that your subject is able to recall CVCs after 8 seconds also or 12 seconds also, then maybe we can say that his memory system is good, or else आपका जो कंट्रोल था सीवीसीज को बनाने में, उसमें भी आपको बहुत ही अटेंशन देकर, बहुत ही मेहनत से सीवीसीज बनाना है कि कहीं कोई सीवीसी सिंपल ना हो जाए, इजी ना हो जाए याद रखने के लिए, दूसरा कठिन ना हो जाए। कठिनाई लेवल सारे 21 सीवीसीज का बराबरी का होना चाहिए। Then you will analyze the data, give your inference about the experiment in form of graphic interpretation, and you will also, as I told you before, take an introspective report from the subject. Now this is the experimental design. In the experimental design, you can see the entire procedure that you will be conducting. So you have the serial number 1, 2, 3. That means these are the 3 different interpolated activity time in seconds. So first is 12 seconds gap, 8 seconds gap, 4 seconds gap. These are the gaps between learning and recall. And in this gap, interpolated activity time, in this gap, your subject will be doing another work. In this case, you will give him a number where he will be subtracting -3, -3, -3, -3 till you ask him to stop. And this work that he will be doing will be for either 12 seconds or 8 seconds or 4 seconds. Then you have the second column, the correct response of subject 1, correct response of subject 2. Then you will total the
both subjects correct response. That means total of 12 seconds, total of 8 seconds interpolated activity, and 4 seconds interpolated activity time. You will bring out the percentage of correct response for, and as you know, you or you will see now when I tell you about the material, you will be taking 21 CVCs. That means 7 CVC of each type. Okay, so 7 of 12, 7 of 8, and 7 of 4. So when it comes to both the subject, the 7 will be 14. That means total of 14 in each category. So whatever the total correct response you get, you will find out the percentage, that is the total divided by 14 into 100 will be the correct percentage of correct response. What will be the instructions that you give your subject? The following instructions have to be given, and the instructions that you give will be in direct speech, like it will inverted commas, exactly the words that you tell your subject. So in this case, you will tell your subject, I will be giving you a simple task in which you have to learn the CVC. CVCs are three alphabets put together: consonant, vowel, consonant. You will learn and recall them when I ask you to recall. And in between, I will give you some simple subtraction work also. Now, this is the data chart. I have just put some data here, and you can see that CVCs I have written 1, 2, 3, 4, 5 till 21. That means there will be 21 CVC. Interpolated time in seconds. Right? 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12. It will go on like that. Then interpolated activity, there's a 2-digit number given, out of which he has to subtract 3 till you ask him to stop, and he will be subtracting as you can see in the column till that interpolated time in seconds are given. So for 4 seconds or 8 seconds or 12 seconds he will be subtracting, and you can see the last column you have the response column. If it is correctly recalled, that means if the CVC is correctly recalled, you put a right. If it is wrongly recalled, you put a wrong. This is an example of the data collection that I have put here. So you can see in the first column serial number, second column activity time, interpolated activity time, that is 12, 8 and 4. Correct response of subject 1, correct response of subject 2, total correct response of both the subject, and percentage of correct response. So in this chart, I have tried to show it in terms of proving the hypothesis. This is just an example, and where I have said that in 4, as you can see in the chart, in the 4 seconds gap, there are 7 CVCs in each category. So in the 4 seconds gap, both the subject have got 7, that is 100%. Then in the 8 seconds, both together have got 11, that is 78% correct. And in the 12 seconds, when the gap is more, 64% responses are correct. So in seeing this data, you can see that the hypothesis is proved right. When the time gap is less, the response of short-term memory is more. And seeing the data collection, you will do the interpretation and discussion. The result will be interpreted and discussed, and this will be discussed in terms of interpolated activity time. So you will be saying in 4 seconds subject 1 could recall this much, subject 2 this much, total this much. In 8 seconds interpolated activity time, subject 1 this much, subject 2 this much, total this much. Same with the 12 seconds. Then you will be talking about the percentage. Exactly, you will be discussing the data collection table in your
interpretation and discussion. This is the graphical representation of the same percentages that we have got, right? So this is the percentage of work done. We can see time gap of 4 seconds, it is going to 100%. Time gap of 8 seconds, it is 78%. Time gap of 12, you can see. So it is exactly representing the data that we have got. And visually, what is the importance of a graph? A graph visually tells you the result. In one diagram, you can see what the result is. So finally, when you write the result, you will be talking about what was your hypothesis. Here in this case, we said that when the time gap is less, short-term memory will be seen. That means if the time gap is more, forgetting will happen. And if it has been proved right, you will be discussing here that my hypothesis was this, whether this has been proved right or wrong. Then the subject will be asked to write a few lines about his experience in doing the experiment. So, what he felt, how he liked. This will be the introspective report which you get from the subject about his feelings while doing the experiment. So, this experiment is related with short term memory, and the format in which I have done the presentation here, the same way you will be writing the practical in your practical file. And when the final practical exam happens, the external comes, will be asking you to write the practical, do the practical and write the practical, and you will be asked what was the hypothesis, what do you mean by a variable, what is an independent variable, what is memory, what is short term memory, what are the different types of memory, what was the result, whether the hypothesis has been proved right. So if you do the experiment well, if you really do it well and not copy it from here and there should not be any problem for you not to do your main exam well. Well, thank you. Take care.